जी मनी हेल्थ शो में मैं नेहा बजाज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज के वीडियो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर गगन एन जैन, जो कि एक डायबिटोलॉजिस्ट हैं। 10 साल का अनुभव आज हमारे साथ साझा करने वाले हैं और साथ साथ डायरेक्टर हैं हेमराज जैन हॉस्पिटल, जो कि पीतमपुरा नई दिल्ली में है। डॉक्टर जैन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, थैंक यू। एंड सर, आज हम डायबिटीज के बारे में आपसे चर्चा करने वाले हैं बिकॉज मधुमेह यानी डायबिटीज आजकल हर किसी को होती जा रही है, इनफैक्ट अर्ली एज में भी। तो क्यों ना उसके बारे में आज हम आपसे कुछ जानें और आप भी हमारे दर्शकों को नई नई चीजें बताएं। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या ज्यादा प्यास लगना, इंक्रीज्ड थर्स्ट, ये डायबिटीज का लक्षण है? अगर है तो ऐसा क्यों होता है? Well, see, ma'am, I think nowadays, as India is becoming the capital of diabetes, it is more than important for us कि हम young में और initial starters for diabetes को हम एकदम initial phase में पकड़े। तो उसके लिए we have to look for basic signs and symptoms जो हम daily life में पकड़ सकते हैं। उनमें से one of it is thirst। जब हम body के अंदर जब शुगर होता है तो ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं। बॉडी के पास कुछ ही तरीके होते हैं शुगर्स को शरीर से बाहर निकालने के। उनमें से एक होता है यूरिन के थ्रू निकालना। एज अ थर्स्ट इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ यूरिन वी प्रोड्यूस इंक्रीजेस, और जितना यूरिन आएगा उतना शुगर शरीर से बाहर निकलेगा। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट वे फॉर आवर बॉडी टू गेट आउट शुगर्स फ्रॉम। So that is why the patient increases, patient's thirst increases, his urine also increases, and his blood sugars come down. Okay. एंड सर, एक और चीज कि डायबिटीज में वेट कंट्रोल, वजन पर नियंत्रण कितना इम्पोर्टेंट है? Well, see, diabetes is a condition in which there's a lot of weight loss happening for the patient. Now, the more of the reason for that is muscle wasting. जो हमारी मसल होती है, जो मेन हमारा वजन होता है, वो मसल का, बोन का एंड वाटर का होता है बॉडी में, as we all know. So what happens is, as हमारी मसल्स टूटने लगती हैं, तो पेशेंट थोड़े से पतले होने लगते हैं। They start to lose weight, they thin out. उनके हाथ और पैर पतले होते हैं, बट आप उनका टमी देखेंगे तो that protrudes out. So that is a disbalance in the weight distribution of the body. While the muscle mass goes low, only the bone mass and the fat mass is left. So I think that's a very important thing which we have to take care of. And the easiest way to get over it would be to increase protein in the diet. Indian diet is very short on proteins overall only. So it is recommended that patients who are already having diabetes should be supplemented with some good diabetic protein supplements so that they should not lose their weight, and that is important for a healthy lifestyle also. Also sir, मेरा तीसरा सवाल आपसे ये है कि what causes extreme fatigue in diabetes? Fatigue या चक्कर भी आते हैं डायबिटीज में? Well, see, there are 2-3 causes of this fatigue. Now, the first important is the previous question which you asked me, weight loss hona. So when the muscle mass is lost, so definitely our ability to do work also goes down, because muscles are like helping us in picking up stuff, moving, running, walking, jogging, doing all basic household activities. So when our muscles are weak, generally we get fatigued early. So that is very common problem faced by all, interrelated also. And the chakkar wala, what you are saying is, that is actually one of the early complications of diabetes which we get. That is, the nerves become weak and the balance of the patient sometimes is not there. He's not able to walk properly because he's not able to identify where he is walking on. He feels as if he's walking on cotton, because the soles of his feet loses all the small nerves. So there's disbalance also, there's difficulty in walking also. So there are multiple things which are happening. So I think that should answer your question. So what are the skin complications that a diabetic person faces? और जिसको डायबिटीज रहती है, क्या ऐसा है कि उसके जख्म लेट भरते हैं, स्लो वुंड हीलिंग होती है? See, this is a very common knowledge. Everything requires sugars, or what you call is energy. Everybody requires it.
So just as we require it for the growth of organisms, also they also require sugars. Hmm. So when a diabetic person has an injury, so whenever an injury is caused, there are a lot of microorganisms or bacteria which grow around that wound. When the patient is having more of sugars, his immunity levels go down, plus the amount of sugars available in the body increases. So there's an ample growth of organisms. So that is why the antibiotics are less effective. That is why it goes on for a longer time, because you'll have to put in an extra effort to get that wound healed, because the immunity is low, healing power is low, muscle is low, and the growth of organisms is more. So if you see all of it, the weight of non-healing, the things involved in non-healing are more than the factors for healing. So that is one of the reasons. That is why we say keep your sugars under good control, have a good healthy diet, so that even if the diabetic patients have wound, they can heal early. एंड सर मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि अगर किसी को डायबिटीज है तो क्या उस वजह से डायरिया भी हो सकता है? Well, see, there are multiple complications of diabetes, and one of them is called diabetes gastropathy. उसके अंदर the most important thing that happens is the indigestion of patients. That digestive power of digestion of the patient decreases. So invariably, whatever he has is not digested, and there's an increased motility of the stomach. So that goes down to the bowels, and he will have an immense urge to pass the stool immediately or sometimes after having food. So this can be the other way around also. The patient might also suffer from severe constipation also. So these are both two ends of the same spectrum. So depending upon the patient, we have to see what is he suffering from, at what end of the spectrum he is, and according to that we will be giving him treatment. सो मधुमेह कहीं ना कहीं आपके पूरे शरीर के सिस्टम को हिला के रख देती है, डिस्टर्ब कर देती है, इसलिए बहुत जरूरी है डायबिटीज मैनेजमेंट। आज हमने डायबिटीज के कुछ लक्षणों के बारे में जाना समझा, और इसी के साथ डॉक्टर गगन हम आपका थैंक यू कहना चाहते हैं। आपने अपने बिजी स्केड्यूल से वक्त निकाला और जी मनी हेल्थ शो में आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर गगन एन जैन, जिन्होंने हमें डायबिटीज के लक्षण यानी सिम्टम्स के बारे में बहुत विस्तार से बताया। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। किसी और विषय पर चर्चा देखना चाहते हैं तो जरूर बताइएगा। और इसी के साथ मैं नेहा बजाज आपसे लेती हूँ इजाजत। मिलेंगे जी मनी हेल्थ शो के एक नए वीडियो में विद न्यू सुपर स्पेशलिस्ट न्यू मेडिकल एक्सपर्ट। टिल देन कीप वॉचिंग जी मनी हेल्थ शो। अच्छी सेहत हमारा बात।